Recording. Okay. So yesterday हमने किया ये. अब ये important result है. जो हमारा next result है, तो you must remember कल हमने क्या किया. कल हमने ये किया. So if actually this, if M is a closed subspace, of a Hilbert space H, and there is some X belonging to H, such that H, it does not belong to M, then when there exists a unique Y naught belonging to M, such that norm of X minus Y naught is equal to infimum over all Y belonging to M, norm of X minus Y. So this is what we showed for a closed subspace. Basically, it has to be a proper closed subspace, because we're assuming that there exists something in H which does not belong to M. Now there is the main result. ये main नहीं, मतलब जो हमारा main argument जिस result से बनेगा हमें to prove the theorem that we can write H as, we want to show that H can be written as M direct sum M per. Okay, now जो हमारा इसके लिए result होगा कि if M is a proper subspace, as a proper closed subspace of a Hilbert space H, then there exists a non-zero vector, then there always exists a non-zero vector Z naught, a non-zero vector Z naught belonging to H, such that Z naught is orthogonal to every element inside M. मैं कहता हूँ Z naught is orthogonal to M, by that I mean Z naught is orthogonal to any element of M. तो हम हमेशा एक proper closed subspace के लिए ऐसा वेक्टर ढूंढ सकते हैं, और इसी को हम प्रूव करेंगे, यूज करेंगे हम जो इससे पहला वाला ये प्रीवियस थ्योरम है. ठीक है. So since it is a proper subspace, right, we know that now let X belong to, there would exist a vector that would be non-zero, which would belong to H, right, such that X does not belong to M. ऐसा तो कोई vector होगा ही, and then we know, and let T be equal to the distance from X to M, which we define as infimum of norm of X minus Y, where Y belongs to M. Then by previous theorem, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा, there exists a unique vector let's call that Y naught belonging to M, such that norm of X minus Y naught is equal to this T, the infimum value. Now let Z naught be equal to this vector X minus Y naught.
and we observe that since D is strictly positive, because why? Because y not belongs to m and x does not belong to m, so they cannot be same. अगर ये same नहीं है तो zero नहीं है, तो इसका नॉर्म फिर पॉजिटिव होगा. जीरो तो तभी होगा जब ये x और y नॉट बराबर. तो d चूंकि पॉजिटिव है, therefore this z naught is a non-zero vector. Oh, non-zero vector. Now अब हम इसमें हमारा आर्बिट्रेटर हम दिखाएंगे ये जो ये z naught इस तरह से है, it is orthogonal to every vector of m. So next page में लेता हूँ. Now we show that z naught y is equal to 0 for all y belonging to m. तो हमारा काम हो गया. We have found a vector, non-zero vector, which is orthogonal to every vector of m. Okay, now for any scalar, इसके लिए हम ये करेंगे, बहुत अच्छा argument है. For any scalar alpha, we know that norm of z naught minus alpha y can be written as norm of because z naught can be z naught is x minus y naught minus alpha y, but that can be written as x minus y naught plus alpha y, which is bigger than equal to t for all y belonging to m. Why? Because this vector, because y naught belongs to m, y belongs to m, it means y naught plus alpha y belongs to m, right? So therefore, but we know that d is equal to infimum of all y belonging to m, x minus y naught. So infimum is always bigger than equal to, so it would be bigger than equal to x minus y naught plus alpha y for any scalar, because for any scalar, this belongs to m. Okay, which implies that, okay, but d is the same thing as norm of z naught. चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ. तो okay, so this is equal to, so it implies that norm of z naught minus alpha y square is bigger than equal to norm of z naught square. So this which implies that अगर मैं यहाँ पे inner product को expand करूँ, z naught minus alpha y, z naught minus alpha y minus norm of z naught square is non-negative, which implies that using the inner product इसको हम चार हिस्सों में बांट सकते हैं. एक तो आ गया अपना, let's write it down. तो कैसे होगा? It would be z naught comma z naught minus alpha y minus alpha y z naught minus alpha y minus norm of z naught square is greater than equal to 0, which can be further simplified as norm of z naught minus z naught alpha y, और यहाँ आएगा माइनस अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूँ z naught minus alpha y y का conjugate minus norm of z naught square is greater than equal to 0. As you can see, but this is norm of z naught square, और यहाँ अगर मैं देखूं, अगर यहाँ से मैं इसको बाहर निकालूं, एक्चुअली मुझे मिलेगा माइनस अल्फा बार z naught y, क्योंकि मैं इसको फ्लिप करूंगा फिर वापस फ्लिप करूंगा, फ्लिप करके अल्फा बार बाहर आ जाएगा. तो it would be minus alpha times
इसको अगर यहाँ पकड़ेंगे, सो इट वुड बी z0 y अल्फा बार माइनस अल्फा बार बाहर, तो इट वुड बी y y बार minus norm of z0 square is greater than equal to 0. As you can see, this and this cancels, so I've got three terms now, which is minus alpha bar z0 comma y minus alpha z0 y ka bar, and minus minus plus mod, so it would be modulus of alpha square, alpha into alpha bar, and then norm of y square. This is greater than equal to 0. So, okay, so let's call this equation 1. And this is true for any scalar alpha. Okay? Now this is true for all y belonging to M and all alpha belonging to my scalar K. Okay? Now if we put, कोई भी स्केलर में अल्फा ले सकता हूँ, ठीक है? अगर मैं इसको पुट करूं अल्फा को बीटा टाइम्स z0 y, where beta is any real number. बीटा पे ये कंडीशन है, वो रियल नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कोई स्केलर होगा, क्योंकि ये ट्रू है फॉर ऑल स्केलर्स, तो मैं कुछ भी स्केलर ले सकता हूँ. इन पर्टिकुलर मेरा स्केलर हो सकता है, इन पर्टिकुलर मेरा स्केलर हो सकता है ये बीटा z0 y. So that would give me, जरा इसको सब्स्टिट्यूट अगर करेंगे, बीटा शुड बी माइनस बीटा बार, बीटा ही रहेगा, है ना? So it would be बीटा, अल्फा की जगह आएगा बीटा, और साथ में आएगा z0 y बार z0 y माइनस बीटा टाइम्स z0 y into z0 y bar plus बीटा स्क्वायर और of course z0 ऐसे इनर प्रोडक्ट y का स्क्वायर. इसको ऑब्वियसली लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव एंड इट्स अ रियल नंबर. सो प्लस नॉर्म ऑफ y स्क्वायर, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट वुड बी नॉन नेगेटिव, राइट? लेकिन ये होगा, अगर मैं एक और बार लिख लूं, सो दिस इज माइनस बीटा टाइम्स, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इट वुड बी मॉडुलस का स्क्वायर. सेम हियर, और यहाँ है बीटा स्क्वायर into z0 y का स्क्वायर into norm of y square is greater than equal to 0. ये सेम है, तो मैं जाऊंगा नेक्स्ट पेज पे. So it would imply that जो हमें मिलेगा minus twice beta times modulus of z0 y inner product का स्क्वायर plus beta square into z0 y का स्क्वायर into norm of y square is greater than equal to 0. Now this is true for all beta belonging to R and y belonging to M. Right? अब अगर मैं थोड़ा सा और इसमें वैल्यूज डाल सकूं, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब सब्स्टिट्यूशन करूंगा मैं. Now let A be equal to this thing, just क्योंकि हमें इसका नजर आया ज्यादा easily, and B be equal to norm of y square, right? We get इसको सिंप्लीफाई करके minus twice beta a plus beta square, this is a into b, is always non-negative for all beta belonging to R, right? Okay, let's call this equation 2. Now ये बोल रहा है कुछ भी ले लो, मतलब बीटा रियल नंबर, तो ये हमेशा ट्रू होगा. हम दिखाएंगे वो सही नहीं होगा. मतलब इफ मैं a को पॉजिटिव लूं,
if A is strictly positive, A मतलब ये, if A is strictly positive, then what does this mean? तो मैं A से थ्रू आउट डिवाइड कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो आई वुड गेट ट्वाइस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, राइट. A खत्म हो गया, into B is always positive. So that would be beta, comma, into beta into P minus 2 is always positive. मतलब is always greater than equal to 0, where A is positive, तो मैंने A को खत्म कर दिया. तो हम ये कह रहे हैं दिस इज ट्रू फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू R, क्योंकि बीटा पे खाली ये कंडीशन है कि वो रियल नंबर है, राइट. तो अगर ये सच है, ए पॉजिटिव है, तो मैं ऐसा इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, फिर ये बन जाएगा ये. लेकिन अगर मैं लूं बीटा को पॉजिटिव, मतलब मैं बीटा कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ, तो अगर मैं बीटा को लेता हूँ पॉजिटिव बट लेस देन 2 by बीटा, नहीं 2 by p, it means 2 बीटा minus 2, नहीं नहीं नहीं, निकल लिया, जस्ट अ मिनट, मुझे चाहिए इसको मैं अगर नेगेटिव करना चाहता हूँ, बीटा b minus 2 is negative, it means बीटा is less than 2 by p. ठीक है, मैंने ठीक ही लिखा था. लेकिन अगर मैं बीटा को लेता हूँ पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी रियल नंबर होगा, बट लेस देन 2 by p, तो इसका मतलब दिस इज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बीटा कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ, और b जो है वो पॉजिटिव है, बिकॉज यू नो y इज अ वेक्टर, राइट. सो आई कैन चूज माई y, क्योंकि ये सभी y के लिए ट्रू है, एक नॉन जीरो y में पकड़ के लाता हूँ, सो दैट दिस इज पॉजिटिव, एंड चूज बीटा बिटवीन 0 and 2 by p, तो ये अनट्रू होएगा. सो इफ a is positive, then 2 is obviously false. For sufficiently small positive beta, जो कि मैं यहाँ कह रहा हूँ, sufficiently small positive beta means beta lying between these two. तो इसका मतलब मैं sufficiently small लूंगा और ये untrue हो जाएगा. अगर मैं a को पॉजिटिव मानूंगा तो ये ट्रू नहीं हो सकता, लेकिन ये तो ट्रू है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, we just choose properties of the inner product. So इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब a पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अदरवाइज ये अनट्रू हो जाएगा. Hence a must be equal to 0, which means that z naught y must be equal to 0 for all y belonging to M. That is, z naught is perpendicular to M, and we are done. So next हम करेंगे what we call projection theorem. हमने इससे पहले भी किया था. Okay. इसको करने के लिए मैं थोड़ा सा, मतलब we would get to the, जो हमें conclusion चाहिए वो इससे हमें मिल जाएगा. वो ये theorem, if M and N are closed subspaces of Hilbert space H, of a Hilbert space H, such that M is orthogonal to N, यानी M का हर कोई एलिमेंट N के हर किसी एलिमेंट को ऑर्थोगोनल है, राइट. यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये होगा, जब मैं कह रहा हूँ M is orthogonal to N, this is saying that X is orthogonal to Y for all X belonging to M,
and y belonging to n. So अगर m is orthogonal to n, then the linear subspace, yeah, the vector space, the linear subspace n plus n is also closed, and इनका जो sum होगा is a भी closed होगा. So let's prove the theorem. ये भी simple है वैसे. Now let, जैसा कि हम दिखाते हैं कि m plus n को क्लोज दिखाने के लिए ये sufficient है कि मैं दिखाऊं it contains all its limit points, जिसके लिए ये sufficient है कि m plus n का closure is contained in m plus n. So let z be a limit point of m plus n. पहले तो ये कि m plus n is the subspace. So m plus n का मतलब क्या होता है? m plus n का मतलब होता है all elements of this type x plus y, x belongs to m, y belongs to n. So of course it's a subspace, वो तो आराम से चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर z1, z2 belong करता है m plus n में, so that means z1 is equal to some x1 plus y1, z2 is equal to some x2 plus y2, where x is belong to m and y is belong to n. So z1 plus z2 is nothing but x1 plus x2 plus y1 plus y2, because addition of vectors is commutative. And of course, this belongs here, so this belongs to m plus. इसी तरह से scalar multiplication. So anyway, it's a subspace, तो हमें दिखाना है closed है. Then अगर ये इसका limit point है, then there exists a sequence. Let's call that Zn, containing in m plus n, such that Zn converges to Z as n approaches infinity. Okay. By assumption, m is orthogonal to n, which implies that इनमें common अगर कोई element हो सकता है तो वो होगा only 0, right? है ना? क्योंकि only 0 is orthogonal to itself. क्योंकि अगर इसमें कोई होगा it has to be, क्योंकि m का हर कोई element है कि हर कोई element से orthogonal है, तो इसको कभी कभी हम disjoint भी कहते हैं. If two subspaces only intersect at the origin, we say they are disjoint, although क्योंकि origin तो हर एक subspace में होगा. Therefore, अगर ये disjoint है, therefore every Zn belonging to m plus n can be uniquely written as, important है, as Zn is equal to xn plus yn, right? ये तुमने वैसे वेक्टर स्पेस में किया होगा कि अगर ये डिसजॉइंट होते हैं, अगर इनमें खाली ओरिजिन मतलब कॉमन होती है, then anything in the sum can be written uniquely as xn plus yn, where xn belongs to m and yn belongs to n, right? क्योंकि otherwise अगर origin के बगैर इनमें कोई element है, then we can have more than one expressions. क्योंकि अगर more than two, we just subtract them. Suppose Zn होता कुछ xn dash plus yn dash, right? और Zn हो xn plus yn भी, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, which means xn minus xn dash plus yn minus yn dash is equal to 0, है ना? So that means this belongs to m, right? Okay. लेकिन अगर ये disjoint है तो इसका मतलब क्या? So
अगर 0 इसके बराबर है then it must belong, ये जो ये वेक्टर है xn minus xn dash yn minus yn dash 0 होगा अगर दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं. So we want to show that ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा. Now कैसे दिखाएं हम? क्योंकि अगर मैं लेता हूं, okay, I want to show that this is unique if now I've got xn minus xn prime belongs to m and yn minus yn prime belongs to n. So does this also belong to n? कुछ मिसिंग है. Okay, so just a minute. So you've got v minus हाँ 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 ऐसे 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 ऐसे. तो अगर मेरे पास दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं जो कि इक्वल है 0 के, व्हाट डज दैट मीन? That means I can put some element यहाँ पे मैं ऐड करूं उसको. हाँ, how do I get both are 0? देखो आइडिया ऐसे है, चलो मैं जरा यहाँ क्लियर करता हूँ. अगर v कैन बी रिटन एज u प्लस w, अगर z है m में भी और z है n में भी थोड़ी देर के लिए, then you can also write it, उतना मुश्किल नहीं है ये सोचना. I can write it as u minus z plus v प्लस z. अब देखो ये भी m में होगा, ये भी n में होगा, राइट? तो हमें दो मिलेंगे, दो तरीके मिलेंगे इसको लिखने, राइट? लेकिन अगर m और n में कॉमन है, राइट, तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ करना है. बट दिस इज बेसिकली द आर्गुमेंट कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सम, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इफ आई कैन फाइंड m z दैट इज कॉमन m एंड n. लेकिन अगर उनमें एक ही कॉमन है देन देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी. तो ऐसे ही मुझे लीनियर अलजेब्रा से याद है, बट यू कैन आल्सो चेक. इस वक्त हम ये कर रहे हैं, चलो इस पे फोकस करते हैं. So Zn can be uniquely written in terms of xn plus yn, and of course xn would be, चूंकि xn m में है, yn n में है, they must be mutually orthogonal. So जैसा कि मैंने कहा था, by Pythagorean theorem जो मैंने कहा था, which was a straightforward thing, I must have norm of Zn minus Zm, which is equal to the square, I think it would be norm of xn minus plus yn, चलो पहले ऐसे ही करते हैं, minus norm of xm plus ym, which would be equal to norm of xn minus xn plus yn minus ym, the square. यहाँ मैं जरा इरेज करता हूँ इसको. अब देखो, अब चूंकि m and n सबस्पेसेस हैं, तो ये बिलोंग करता है m में, ये बिलोंग करता है n में, because their subspaces different, x's are in m, y's are in n. So इसका मतलब क्या हुआ? they mutually orthogonal है. तो पाइथागोरियन थ्योरम ये कहता है this must be equal to, यानी I must get, अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा,
That is मैं लिखूंगा norm of Zn minus Zm square is nothing but xn minus xm का square plus yn minus ym का square. Okay, so it implies that, what does it imply? It implies that अब मुझे ये भी पता है कि now since Zn जो है is a convergent sequence, है ना? Because Zn converges to Z implies that Zn is a Cauchy sequence. A Cauchy sequence in M plus N. अब अगर एक Cauchy sequence है, it becomes that इसको अगर नाम देते हैं कुछ, let's call it 1, तो अगर इसका right hand side 0 हो जाएगा as nm becomes infinity, so इसका मतलब वो तभी मुमकिन है चूंकि it's a sum of two positive terms, ये non-negative terms, ये दोनों के दोनों 0 हो जाए. तो hence from 1 xn n runs from 1 to infinity is a Cauchy sequence in M, and yn n runs from 1 to infinity is a Cauchy sequence in N, which is contained in H, and H is a Hilbert space, which implies that xn converges to some x belonging to H, and yn converges to some y belonging to H, but M and N are closed, so they must contain their limit points, which implies that x belongs to M and y belongs to N. Okay, now Z is equal to limit n approaches infinity xn plus, Z is equal to limit n approaches infinity Zn, but that can be written as limit n approaches infinity xn plus yn. अब चूंकि addition is continuous, we can distribute it. तो n approaches infinity yn, जो कि हमने देखा है, it is equal to x plus y, and we know that x belongs to m and y belongs to n. This belongs to m plus n, which implies that m plus n is closed. Okay, now we come to the final conclusion. Final conclusion here है कि I can write h as m plus m perp, जो कि अब easy है once we've done all this preliminary work. Theorem: if M is closed, M is a closed linear subspace of a Hilbert space H, then H can be written as M plus M direct sum M. So proof इसका जो हमने ऊपर किया उसी से आ जाएगा. So since सर previous page एक बार फिर से सर. Okay, no? नहीं, theorem है simply कि जो मैं इतनी बार कह रहा हूँ कि हमें ये अल्टीमेटली प्रूव करना था, हमें ये, और वह सारे जो 3 रिजल्ट्स थे वो इसका प्रिलिमिनरी वर्क है. लेकिन अगर एग्जाम में ये लॉन्ग आंसर आ जाए तो तुम ये पूरा शुरू से दिखा, वो तीनों रिजल्ट्स इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये तो लास्ट पे कंक्लूजन तो 2 लाइंस में हो जाएगा, उसमें उतना नहीं. ठीक है. सो पहली बात तो ये है कि M and M perp are closed subspaces of H. Why? मतलब बाय आवर assumption M तो है ही क्लोज, लेकिन किसी भी सेट का पर्प क्लोज सबस्पेस होता ही है.
अगर ये सबस्पेस नहीं भी होती M तो M perp सबस्पेस होती, तो ये दोनों क्लोज्ड सबस्पेसेस ऑफ H है. So by previous theorem, what? By previous theorem, तो हमें मिलेगा basically M plus M perp is a closed subspace of H. We prove that actually M plus M perp is equal to H. Subspace तो है ही, तब subset तो होगा. Now assume to the contrary, ऐसा नहीं है तो ये proper subspace होगा. Assume to the contrary, M plus M perp is a proper closed subspace of H. But उसका मतलब ये है कि then there exists, जो हमने एक रिजल्ट किया था इससे पहले, a non-zero vector Z0 such that Z0 is orthogonal to this subspace, every element of this subspace M plus M perp. So which implies then हम दिखाएंगे, now अगर Z0 है perpendicular to all, right, it implies that Z0 is orthogonal to X plus Y, where X belongs to M and Y belongs to M perp, right? So it implies that Z0 comma X plus, oh, I should write Z0 X plus Y is equal to 0 for all X belongs to M and Y belongs to M perp, which implies that Z0 X plus Z0 Y is equal to 0, right? For all X belonging to M and Y belonging to M perp. तो लेकिन इसमें 0 भी होता है. If I take Y equal to 0, now putting X equal to 0 and then Y equal to 0, क्योंकि M में 0 है, वो सब स्पेस है, origin तो इसमें होगा ही. तो अगर ऐसा है, it implies that Z0 X भी 0 है and Z0 Y भी 0 है. So that is for all X belonging to M and for all Y belonging to M perp, which implies that Z0 actually belongs to M and Z0 also the M perp and Z0 also belongs to M double perp, right? That is Z0 belongs to M perp intersection M perp ka perp, which is a contradiction because Z0 is not equal to 0.